Good morning, children. Welcome to all in your math class. I am Neetu, your math teacher. I hope you are healthy, happy, and safe at home. I have not been able to send you videos for a long time. I had a personal problem. I apologize for this. Now we come to the point. Today we will do remaining part of chapter 1 in my observation book. So let's start from question number 7. Fill in the boxes with the correct symbol. Correct symbol. Greater than, equal to, and less than. Greater than. It is a symbol that indicates that the first number is greater than the second number. Equal to. It is symbol used to express two equal number. It is a symbol used to express two equal numbers. Less than. It is symbol that indicates that the first number is smaller than the second number. Question number A. 17, 23. 17 and 23. First of all, we will compare the numbers from left to right. Compare the number from left to right. These are two-digit numbers. So first of all, we will compare the digit at the tens place. जो tens place पर digits हैं उन्हें हम compare करेंगे. यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ क्या है 2. तो which is greater? 2 is greater than 1. So 17 is less than 23. 17 is less than 23. तो कौन सा साइन होगा? Less than. Question number B. 30 and 27. 30. So first of all we will compare the digit at the tens place 3 and 2. 3 is greater than 2. So 30 is greater than 27. 45. 45. First of all we will compare the digit at the tens place. Tens place. If the value of the digit at the tens place is the same in both number, then compare the value of the digit at ones place. At the ones place. जब हमारी tens place की दोनों नंबर्स की वैल्यू सेम है तो अब हम किन्हें कंपेयर करेंगे? वंस प्लेस की डिजिट को कंपेयर करेंगे. तो 5 5. अब वंस प्लेस की भी हमारी जो वैल्यू है दोनों नंबर की वो सेम है. तो इसमें कौन सा साइन होगा? 45 एंड 45 इक्वल टू. इट इज क्लियर. तो इसी टाइप से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं. दिस इज योर होमवर्क. Now, question number 8. Write the following numbers in increasing order. Increasing order means when we write numbers from the smaller to the larger, we call it increasing order of numbers. First of all, we will compare the digits. Compare the numbers. 10, 11, 21, 51, 31. Which is smaller number? कंपेयर करना है नंबर्स को हमें. तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? When we write numbers from smaller to larger number.
तो स्मॉलर नंबर, विच इज स्मॉलर नंबर? 10, 11, 21. तो 10 is smaller number. So first of all we will write 10. Now we will cross this number. Now we will compare the numbers 11, 21, 51, 31. Which is smaller number? 11. Cross it 11. Now we will compare 21, 51, 31. 21 is smaller number. So 21. Now we will cross. Now we will compare both number 51 and 32. 51 and 31. 31 is smaller than 51. So first of all we will write 31 and now we will write 51. So it is called increasing order, smaller to larger number. Question number B. 33, 23, 13, 53, 43. First of all, we will compare the numbers. Compare the numbers 33, 23, 13. 13 is the smaller number. 13. First of all, we will write 13. Now, we will compare these numbers 33, 23, 53, 43. 23 is a smaller number. 23. Now we will write 23. Now we will compare 33, 53, 43. 33 is smaller than 43 and 53. So 33. Now we will write 33. Now we will compare both numbers 53 and 43. 43 is smaller than 53 and larger number is 53. So these are called increasing order. When we write numbers from the smaller to larger number, we called it increasing order. Question number C, D, E, F. This is your homework. Now we will. Question number 9. Write the following numbers in decreasing order. Decreasing order means when we write numbers from the larger to smaller number, we called it decreasing order of numbers. Question number A. 21, 19, 23, 27, 31. First of all, we will compare the numbers. 21, 19, 23, 27, 31. 31 is the largest number in all numbers. So first of all, we will write 31. Now we will compare the rest numbers. 21, 19, 23, 27. 27 is smaller than 31. तो नेक्स्ट नंबर 27. इसी टाइप से हमें सारे नंबर्स लिखने हैं. अब 27, अब 21, 19, 23. तो तीनों में कौन सा बड़ा है? 23 इज ग्रेटर देन 21 एंड 19. नेक्स्ट, नाउ वी विल कंपेयर 21 एंड 19. 21 is greater than 19 and 19 is the smaller number. तो इसी टाइप से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं. डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स when we arrange the number from larger to smaller number, it is called decreasing order. Question number B. 35, 33, 39,
32, 34. First of all, we will compare the all numbers. So 39 is greatest number. 39 is the greatest number. क्रॉस किया. अब जो बाकी के बचे हैं नंबर्स उनमें हमें कंपेयर करना है विच इज़ ग्रेटेस्ट नंबर. तो 35 इज़ ग्रेटेस्ट नंबर. तो नेक्स्ट डिजिट we will write 35. Now we will compare 33, 32 and 34. 34 is greater than 33 and 32. Now we will compare 33 and 32. 33 is greater than 32 and last smaller number is 32. इट इज़ क्लियर. तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर C, D, E, F. दिस इज़ योर होमवर्क. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 10. एडिशन. Add the following numbers. Addition. When we add two numbers each together. When we two objects each together, it is called addition. First of all, we will add the digit at the ones place. तो जब हम एडिशन करेंगे तो हमें किधर से शुरू करना है? एडिशन राइट हैंड साइड से. और राइट हैंड साइड पर हमारी क्या है? वंस प्लेस. तो जो वंस प्लेस पर डिजिट्स होंगे उन्हीं को हमें ऐड करना है. तो 1 + 4. 1 + 4. तो 1 और 4. ये 4 फिंगर्स हैं. देखो 1 फिंगर, 4 फिंगर काउंट करने हैं. 1 2 3 4. टोटल फिंगर्स 1 2 3 4 5. 1 + 4 5. 3. First of all, we will count 3 fingers. 1 2 3. Now we will count 1 finger. 1. Now we will add total fingers. 1 2 3 4. 3 + 1 = 4. इसी टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड वंस प्लेस डिजिट्स 2 + 5. 2 + 5. पहले 5 फिंगर ऐड करनी है आपको. 5 + 2 7. नाउ वी विल ऐड द डिजिट एट टेंस प्लेस. 4 + 1 = 5. Question number C. 1 + 1 2 and 5 + 1 = 6. Question number D, E, F. This is your homework. Now we will do question number 11. Subtract the following numbers. Subtract the following numbers. तो subtract का मीन्स क्या होता है? The process or skill to taking on numbers or amount away from another. Always subtract the smaller number from the bigger number. Always subtract the smaller number from the bigger number. हमें हमेशा जो बिगर नंबर होता है उसमें से स्मॉलर नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना होता है. हमेशा बड़े नंबर को, जो हमारा बिगर नंबर होगा, उसे हमें टॉप पर रखना होता है. बिगर नंबर को हमें टॉप पर रखना होता है. क्यों? क्योंकि अगर आपके पास 2 मैंगोज़ हैं और मैं कह रही हूँ आपको 3 मैंगोज़ आपको ईट करने हैं, तो आप ईट कर सकते हो 3 मैंगोज़. क्यों? क्योंकि आपके पास तो 2 ही हैं. तो हमेशा हमें जो बिगर नंबर होता है उसको हमें टॉप पर रखना होगा. तो इसीलिए मैंने कहा है ऑलवेज सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल we will subtract from the right hand side. So first of all we will subtract the digit at the ones place. 3 - 1. First of all we will draw
3 लाइन्स 1 2 3. अब नीचे क्या लिखा हुआ है 1. So we will cut 1 line. How many lines are left? 2 lines. So 3 minus 1 is equal to 2. 2 minus 1. We will draw 2 lines. 2. नीचे क्या लिखा है 1. Now we subtract 1 line. 1 line is left. 2 minus 1 is 1. Now we will do question number 2. We will start the question from the right hand side. Right hand side. First of all, we will subtract the digit at the ones place. 9 minus 3. First of all, we will draw 9 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lines. नीचे क्या है 3. Now we will count 3 lines. 1, 2, 3. Count 3 lines and cut. How many left lines? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 minus 3 is equal to 6. Now we will subtract the digit at tens place. 3 minus 2. 3. First of all, we will draw 3 lines. 1, 2, 3. 3 lines. Now we will count 2 lines. 1, 2 and cut the 2 lines. How many lines are left? 1 line is left. So 3 minus 2 is equal to 1. तो 39 minus 23 is equal to 16 our answer. इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर C, D, E, F. This is your homework. I hope you have understood this topic very well. Tomorrow we will do remaining part of this chapter. Thank you.